Assalamu alaikum students, this is me Ahmad, your English teacher. Yesterday in the previous lecture I have discussed the first page of chapter 9. It is page 20 of the Mr. Chips. And now today I will discuss about the second part of chapter 9 from page 21 to page 22. I will first read the second paragraph of chapter 21 and I will explain about these remaining parts of the chapter 9 of Mr. Chips. So the second paragraph discusses about some students of Mr. Chips, and he recalled the names of his famous students, and I will discuss about some of those names in little snatches of a chorus recurred to him ever afterwards without any effort of memory. अब कुछ नेम थे जो उन्हें अभी भी याद थे. स्नैचेस ऑफ अ कोरस मीन्स कोरस कहते हैं या ग्रुप ऑफ सिंगर्स को या ग्रुप ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं. तो ये ओवरऑल ये ऐसा नाम थे जो उनके दोबारा माइंड में एक रिकॉल हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे पूरे एक रिदम के थ्रू, कि मतलब कि एक रिदम बन गया था इन नाम की वजह से जो उन्हें इसलिए याद रहे थे. रिकर्ड टू हिम, रिकर्ड कहते हैं रीअपियर होना या रिपीट होना. अच्छा, एंड सम ऑफ दोज नेम्स आर एंसवर्थ, एटवर्ड, एवॉनमोर, बैबकॉक, बैग्स, बर्नर्ड, बेजेंथवेट, बैटर्सबी, पेकल्स, बेडफोर्ड, मार्शल, बेंटली, बेस्ट. Another one, Ansley, Wales, Wetham, Wagstaff, Wellington, Waters, Primus, Waters, Secundus, Watling, Waveney, Webb. And yet another that comprised, as he used to tell his fourth form Latinist, an excellent example of a hexameter. अब हेक्सामीटर क्या होता है? हेक्सा कहते हैं 6 को. एक मीटर होता है जिसमें पोएम में हम पार्ट होते हैं, एक रिदम होता है, ठीक है. ये हेक्सामीटर से एक पोएम का रिदम होता है. मैंने आपको बताया कि उसने अपने स्टूडेंट्स के पूरे जो कलेक्शन ऑफ नेम्स है ना, उस पूरे नाम को उसने कोरस कहा था. तभी वो कहता है कि हेक्सामीटर एक मीटर का कलेक्शन बन जाता है, ठीक है. मतलब कि एक क्या कहते हैं, जैसे पोएम का एक रिदम होता है ना, कोई नज़म का एक सीक्वेंस चार होता है एक हारमोनी के साथ. ये उसी तरह कहता है कि नाम उसके माइंड में ऐसे ऐसे आते रहते हैं मिस्टर चिप्स के, और वो बार बार रिपीट करते रहते हैं. Where had they all gone to? He often pondered. Sometimes he thinks that where they all the students have gone. मतलब वो सोचते हैं ये कहाँ चलेंगे ये सारे स्टूडेंट. Those threads he had once held together. अब ये वही सारे threads थे, वही ज़्यादा strings थी, मतलब कि वही एक क्या कहते हैं एक रस्सी थी जो मिस्टर चिप्स ने पकड़ के रखी हुई थी. मतलब ये बात कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से, तो वो किधर गायब हो चुके हैं. How far had they scattered? मतलब कि वो वेयर हैड ऑल दो स्टूडेंट्स डिस्पर्स और डिस्ट्रैक्टेड और ब्रेकअप, मतलब कहाँ चले गए सारे स्टूडेंट्स. सम टू ब्रेक, अदर्स टू वीव इनटू अननोन पैटर्न्स. और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो तो बिखर चुके हैं, ब्रेक हो गया, मतलब कि प्रॉब्लली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड डाइड. कुछ क्या कहते हैं ज़िंदा नहीं रहे, और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी फील्ड में चले गए हैं जो मिस्टर चिप्स को भी अब जहन में नहीं है कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए. The strange randomness of the world beguiled him. अब randomness कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसमें कोई पैटर्न ना हो. और वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड का इतना अजीब सा पैटर्न है जो इनको मिस्टर चिप्स को धोखे में रखा है. beguiled कहते हैं डिसीव को, ठीक है. That randomness which never would, so long as the world lasted, give meaning to those choruses again. अब ये वही रैंडमनेस है. वो कहते हैं कि कभी भी क्या कहते हैं ये वर्ल्ड जब तक रहा ना, ये उस कोरस को कुछ एक डेफिनेट मीनिंग नहीं दे सकता. मतलब कि वो कोरस आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा है जिस तरह ये वर्ल्ड में शिफ्टिंग हो रही है. ये कोरस से क्या मुराद है? कोरस से मुराद उनके अपने स्टूडेंट्स हैं वो सारे, ठीक. And behind Brookfield, as one may glimpse a mountain behind another mountain when the mist clears. ग्लिम्स कहते हैं व्यू को. कहते हैं कि समटाइम्स जब क्या कहते हैं फॉग डिसअपियर होती है ना, या मिस्ट क्या कहते हैं क्लियर हो जाती है, तो इट वाज अ वेरी गुड व्यू behind Brookfield, the view of mountain behind another mountain. मतलब कि it was a collection of it was a pack of mountains behind the Brookfield.
आपको इस चीज़ से समझ आनी चाहिए कि ब्रुकफील्ड ऐसी जगह पे क्या कहते हैं लोकेटेड है जहाँ पर माउंटेनस एरिया, ठीक है। ही सॉ द वर्ल्ड ऑफ चेंज एंड कन्फ्लिक्ट। अब मतलब कि वो बिहाइंड द वॉल्स ऑफ ब्रुकफील्ड ही बेसिकली सॉ द वर्ल्ड ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वर्ल्ड ऑफ चेंज। अब वर्ल्ड ऑफ चेंज मतलब क्या है, मॉडर्न फैशन को शो करा है, मॉडर्निटी को शो करा है, और मिस्टर वैसे भी क्या कहते हैं मॉडर्निटी के ख़िलाफ़ थे, ठीक है। एंड ही सॉ इट मोर देन ही रियलाइज विद द रिमेंबर्ड आइज ऑफ कैथी। अब कैथी उसकी जो वाइफ थी कैथरीन, बेसिकली कैथरीन वाज एन ऑर्थोडॉक्स वुमन, मॉडर्न वुमन, and he saw the world behind the Brookfield wall as through the eyes of Catherine, through the eyes of his wife, the modern ways of looking something. She had not been able to bequeath him all her mind up, and Catherine had not been able to bequeath him all her mind. अब बेसिकली bequeath कहते हैं कोई शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है, जिसमें विल हम ट्रांसफ़र करते हैं ना। तो कैथरीन ने ओवरऑल अपनी क्या कहते हैं पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेड्स थे ना, वो मिस्टर चिप्स में पास आउट नहीं किए थे, लेकिन कुछ ट्रेड्स अभी भी मिस्टर चिप्स में शो हो रहे थे, जिससे वो क्या कहते हैं वर्ल्ड को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लग गए थे। स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, बट शी हैड left him with a calmness and a poise that accorded well with his own inward emotions. अब मिस्टर चिप्स के अंदर एक सर्टन क्या कहते हैं कॉमनेस आ गई थी, एक पोइज आ गया था। पोइज कहते हैं POISE, बैलेंस को कहते हैं। मतलब कि कैथरीन हैड प्लेस्ड अ सर्टन काइंड ऑफ बैलेंस, अ सर्टन काइंड ऑफ बिक्विथ, सर्टन काइंड ऑफ calmness, a balance in the personality of Mr. Chips. And now in his personality everyone can see the balance, the harmony, the peace, because of the work of his wife Catherine. It was typical of him that he did not share the general jingo bitterness against the boys. Boys basically क्या थे? Boys basically वो राइवल किस्म के लोग थे जो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे, ठीक है। It was they were basically Africans. तो अफ्रीकन्स में आपको पता है ब्रिटिश ने हर जगह कॉलोनियाँ बनाई हुई थी, तो अफ्रीकन्स में जो लोग क्या कहते हैं एक राइवल्स उठे थे ना, तो उन्हें हम बॉयड्स कहते हैं। नो डैट ही वॉज अ प्रो बॉय, ही वॉज फॉर टू ट्रेडिशनल फॉर डैट, एंड ही डिसलाइक द पीपल, द काइंड ऑफ पीपल हु वर प्रो बॉयड्स। अब जो लोग क्या कहते हैं बॉयड्स को सपोर्ट करते थे ना, तो बेसिकली मिस्टर चिप्स वर अगेंस्ट ऑफ दैम। मिस्टर चिप्स उन लोगों के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि मिस्टर चिप्स का मैंने आपको बताया था माइंड सेट अभी भी बेशक थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी जो थोड़े बहुत ट्रेड्स कैथरीन के भी उन पे आ गए थे, लेकिन वो फिर भी अभी भी क्या कहते हैं ओल्ड ट्रेडिशनल थे, ठीक है, ट्रेडिशनल थे। अच्छा मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन। अच्छा But still it did cross his mind at times that the poets were engaged in a struggle that had curious similarity to those of certain British English history book heroes. Hereward the Wake. Hereward the Wake बेसिकली एक क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा लेजेंड था इनका इंग्लैंड का। तो ये क्या करता था, ये लॉ को क्या कहते हैं मानता नहीं था। It was basically he was a lawless person, an outlaw who did not follow the law at his time. A legendary account of wandering of this outlaw is available. He belonged to the 11th century England. Basically जो Hereward the Wake था ये 11th century का टाइम का था, इनका लेजेंड था। फॉर इंस्टेंस और कैरेक्टोकस भी हम ये कह सकते हैं कि तो जो कैरेक्टर्स था वो भी अ काइंड ऑफ सिल्मस इन द वेस्ट ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रीन ऑफ साइडियस ही वाज डिफीटेड बाय द रोमन्स। मतलब कि ये भी क्या कहते हैं एक किंग था एक ब्रिटिश रिजीम में, तो जिसको डिफीट हुई थी रोमन्स से, ठीक है। ये सारे मिस्टर चिप्स क्यों बता रहे हैं, अपनी तारीख बता रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड की। He once tries to shock his fourth form by suggesting this, but they only thought it was one of his little jokes. मतलब कि समटाइम्स मिस्टर चिप्स का कहते हैं कुछ अपने सर्टेन हीरोज़ जो इंग्लैंड के हीरोज़ ब्रिटिश हीरोज़ थे अपने जो उनके पास्ट के, वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ when मिस्टर चिप्स try to explain certain history about the people belong to a British, then most of his students made fun of him, that they considered that Mr. Chips was making a joke of making a joke of the history, लेकिन मिस्टर चिप्स के जोक्स नहीं कर रहे थे, वो बेसिकली थोड़े सीरियस थे। However heretical he might be about the boys, he was orthodox about Mr. Lord George
जॉर्ज एंड द फेमस बजट। और फिर भी क्या कहते हैं, मिस्टर लॉर्ड जॉर्ज थे वो थोड़े मॉडर्न किस्म के बंदे थे, लेकिन मिस्टर सभी भी क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब कि ट्रेडिशनल थे, ओल्ड किस्म के बंदे थे। ही डिड नॉट केयर फॉर ईदर ऑफ देम एंड व्हेन years later LG means Lord George came as a guest of honor to Brookfield's speech. Chip said on being presented to him, Mr. Lord George, I am nearly old enough to remember you as a young man. I confess that you seem to me to have improved a great deal. After some years, after certain years, when Mr. Lord George came to Brookfield as a chief guest, but Mr. Chips mocked Mr. Lord and Lord George and said, "You seem to have improved a great deal." Basically, Mr. Chips जो मिस्टर लॉर्ड जॉर्ज है उनके अपने हो सकते हैं उनके स्टूडेंट रह चुके हों या ब्रुकफील्ड के पहले हिस्से रह चुके हों, बाद में मिस्टर चिप्स जब उन्हें देखते हैं कि वो एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आते हैं ब्रुकफील्ड में, तो मिस्टर चिप्स उनका थोड़ा सा कहते हैं कि फ़न भी मेड फन ऑफ हिम करते हैं, थोड़ा उसका मजाक उड़ाते हैं कि आप में बहुत अच्छी सी मतलब कि कुछ चेंजेस आ चुकी हैं पहले की निस्बत। द हेड स्टैंडिंग विद दैम वाज रादर एगास्ट। अब जो हेड ऑफ दी ब्रुकफील्ड था ना, उसको मिस्टर चिप्स की इस बात पे थोड़े से हैरत भी थी और थोड़ा सा क्या कहते हैं हॉरिफाइड हो गया था, घबराहट सा हो गया था, ठीक है। बट LG laughed heartily and talked to Chips more than to anyone else during the ceremonial that followed. लेकिन जो मिस्टर जॉर्ज थे ना, वो during the whole event, during the whole ceremony, during the whole event, he basically was busy in a conversation with Mr. Chips. Just like Chips was commented afterwards, he gets away with it. I suppose at that age, anything you say to anybody is all right. Basically, Mr. Chips was at the age of about I think so 80s. So at that time of period of anyone, everyone can say to anyone anything, मतलब कि आप कुछ भी कोई किसी को कह सकते हैं, मतलब कि अब वही मिस्टर जॉर्ज में भी यही कहा था कि मिस्टर चिप्स अब ऐसी एज में पहुंच चुके हैं, तो अगर वो किसी को कुछ कहें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। So this is the end of chapter 9. I hope you understood it well, students. If you have any queries or any questions, you can ask me. Goodbye, take care, stay safe. Allah Hafiz.